Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear students, a few days ago I had done a video explaining Surah Al Qadr in English. Then I thought that it would be better if I explain it in Urdu also for the benefit of our Urdu speaking students. So I hereby try to explain the verse of Surah Al Qadr briefly in English as well as in Urdu also. My dear students, as all of you know that we are having two surahs in our syllabus of semester 2. They are Surah Al Qadr and Surah Al Zilzal. Surah Al Qadr is the 97th surah of the Holy Quran and Surah Al Zilzal is the 99th surah of the Holy Quran. Surah Al Qadr is Makkiyah, it means it was revealed at Makkah Mukarramah, whereas Surah Al Zilzal is Madaniyah, it means it was revealed at Madina Munawwara. Surah Al Qadr has 5 verses, whereas Surah Al Zilzal has 8 verses. So let us study the translation of Surah Al Qadr. Here you can see the screen. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslu Thani, second semester, semester 2. Al-Wahdatul Ula, first unit, unit 1. Al-Nathrul Qadim, classical prose. The whole Holy Quran is considered as classical prose. 97th surah, Surah Al Qadr. Out of 114 surahs of the Holy Quran, its position is the 97th one. Bismillahirrahmanirrahim. At first, let us learn to read the verses correctly. I will read out the verses 2 to 3 times. You please repeat them with me so that you should also be well versed in the verse of the surah. So let us start. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. First ayat. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. I repeat. You also repeat with me. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Second ayat. Wama adraka ma laylatul qadr. Wama adraka ma laylatul qadr. I repeat. Wama adraka ma laylatul qadr. Third ayat. Laylatul qadri khayrum min alfi shahr. Laylatul qadri khayrum min alfi shahr. Repeat with me. Laylatul qadri khayrum min alfi shahr. Fourth ayat. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. I repeat, you also repeat with me. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Fifth ayat. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. I repeat. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. Now let us come to the translation. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. First ayat. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Indeed, we have revealed it on the night of power. Inna means indeed we. Anzalna, we have revealed. Who it means the Holy Quran. It is given in the bracket. Fi in Laylatul Qadr. Layla means night. Al Qadr, the power. Fi Laylatul Qadr, on the night of power. In English, it is better to say on the night of power instead of in the night of power. So the total translation is indeed we have revealed it. It means the Holy Quran on the night of power. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Indeed we have revealed it on the night of power. Laylatul Qadr, the night of power happens on the odd nights of the last 10 days of Ramadan. That is 21st, 23rd, 25th, 27th and 29th nights of Ramadan Sharif. Some scholars suggest that it is on the 27th night of Ramadan Sharif. Now next ayat. Wama adraka ma laylatul qadr. And what will make you know what the night of power is like? Wa and ma what adraka will make you know. Ma what
Layla, night, Al Qadr, the power. Ma adraka ma Laylatul Qadr, and what will make you know what the night of power is like? It means, do you have any idea what the night of power is like? This ayat is in the form of a question. It suggests the greatness and importance of Laylatul Qadr, the night of power. Then Allah subhanahu wa ta'ala himself explains in the next ayat, third ayat, what is Laylatul Qadr? Laylatul Qadri khayrum min alfi shahr. The night of power is better than 1,000 months. Laylatul Qadri, the night of power, khayrun is better, min than alfi shahr, 1,000 shahr months. The night of power is better than 1,000 months. The night of power is better than 1,000 months with regard to its greatness and reward. Allah subhanahu wa ta'ala did not say that Laylatul Qadr is equivalent to 1,000 months, but Allah subhanahu wa ta'ala says khayrum min alfi shahr. It is better than 1,000 months. If we calculate 1,000 months in years, it could be 83 years and 4 months. So the worship of that night gets the reward of more than 83 years and 4 months. Now the fourth ayat, تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل, descend, come down. Al-malaikatu, the angels. It is the plural form of malak, angel. Malak, singular. Malaika, plural, the angels. Warruh, wa, and ar-ruh, the spirit. Here, ruh refers to Ruhul Amin, the Jibreel alayhi salam. Fiha, on that night. Bi-idhni rabbihim, bi-idhni, with the permission. Rabbihim, of their Lord. Rabbihim, their Lord. Min kulli amrin, with all the matters, with every matter. The total translation, on that night, the angels and the spirit, that is Ruhul Amin, Hazrat Jibreel alayhi salam, come down to earth with the permission of their Lord with every matter. So on that night, the angels along with Ruhul Amin, Jibreel alayhi salam, come down to earth, join the gatherings of worshippers and pray for them. The angels come down to earth by the order of Allah with every matter. Now the last ayat, Salamun hiya hatta matla'il fajr. It is peace until the break of dawn. Salam, peace. Hiya, it is peace. Hatta, until matla', the break, al-fajr, dawn. So Salamun hiya hatta matla'il fajr. It is, that night is peace until the break of dawn. That night is peaceful until the break of dawn. That night is full of peace from all kinds of evils, calamities and disasters until Subh Sadiq, until the break of dawn. Now we have finished the translation of the verses. Now reference the context. How will we write the reference the context of these verses? You can see here, it is a common reference for any ayat. In the question paper, in section A, the first question will be of the verses of these surahs. Two surahs, Surah Al Qadr or Surah Al Zilzal. 2 to 3 verses will be given to you. The question will be like this: translate or explain the following with reference the context. So at first you will have to write the exact translation of the given verses. Then you can write like this. You can see on the screen. The above verses are taken from Surah Al Qadr. If the ayat or if the verses are from Surah Al Zilzal, then you can write the above verses are taken from Surah Al Zilzal. Okay. Now here it is Surah Al Qadr. When you mention the name of the surah, then you write the position of the surah in the Holy Quran. You can see here it is the 97th surah of the Holy Quran. Its number is 97th one. Then where was it revealed? Mentioned here, it was revealed at Makkah Mukarramah. This surah was revealed at Makkah Mukarramah. Now how many verses, how many ruku are there in this surah? It has 1 ruku and 5 verses. A common reference for any ayat of this surah. Okay. Now next, in this surah, Allah subhanahu wa ta'ala describes the greatness of Laylatul Qadr, the night of power, that is better than 1,000 months with regard to greatness and reward. So it is a common reference for any verses or any verse or verse of this surah.
Okay. Now, let me explain the same verses of this surah in Urdu also. Okay. Now let us start from the beginning. Bismillahirrahmanirrahim. शुरू करता हूँ मैं अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है. फर्स्ट आयत, पहली आयत, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इसको यानी कुरान शरीफ को लैलतुल क़द्र यानी शब क़द्र, क़द्र वाली रात, क़द्र की रात में नाजिल किया. इन्ना बेशक हमने, अंज़लना हमने नाजिल किया, हु उसको यानी कुरान शरीफ को, फी लैलतुल क़द्र, क़द्र वाली रात में, शब क़द्र में. ओके. नाउ नेक्स्ट आयत, सेकंड आयत, दूसरी आयत, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और क्या आप जानते हैं कि शब क़द्र क्या है? क्या आपको कुछ मालूम है कि शब क़द्र, लैलतुल क़द्र क्या है? ओके. तो किसी चीज़ की अहमियत को बतलाने के लिए इस तरह के सवालात करते हैं कि आपको मालूम है वो क्या चीज़ है. उसके बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला खुद उसका जवाब देता है, उस आयत की तशरीफ फरमाता है. तीसरी आयत में लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, लैलतुल क़द्र, शब क़द्र 1000 महीनों से अफजल है. शब क़द्र या क़द्र वाली रात 1000 महीनों से बेहतर है फजीलत और सवाब में, दूसरी रातों से 1000 महीनों से बेहतर है. अल्लाह ताला ने यह नहीं फरमाया कि लैलतुल क़द्र यानी शब क़द्र 1000 महीनों के बराबर है, बल्कि ये फरमाया कि शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है. तो बंदे मोमिन की उस रात की इबादत का सवाब 1000 महीनों से ज़्यादा इबादत करने से अफजल है, बेहतर है. चौथी आयत, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, उस रात में फरिश्ते और रूह यानी रूहुल अमीन हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए ज़मीन पर उतरते हैं. तनज़्ज़लु उतरते हैं, अल मलाइका फरिश्ते, वर्रूह रूह भी यानी रूहुल अमीन हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, फ़ीहा उस रात में, बिइज़्नि रब्बिहिम अपने रब की इजाज़त से या अपने रब के हुक्म से, मिन कुल्लि अम्रिन हर काम के लिए, हर मामलात के लिए. वो फरिश्ते इबादत गुजारों के साथ शामिल हो जाते हैं, उनके लिए दुआएं करते हैं, उनकी दुआओं पर आमीन फरमाते हैं. आखिरी आयत, सलामुन हिय हत्ता मतलअल फज्र, वो रात सरापा सलामती ही सलामती है फजर तुलू होने तक. सलाम सलामती ही सलामती है, हिया वो रात, हत्ता यहाँ तक के, मतलअल फज्र फजर तुलू होने तक, फजर सुबह सादिक फूट पड़ने तक वो रात सलामती ही सलामती है. ये था आयतों का तर्जुमा. अब रेफरेंस द कॉन्टेक्स्ट, हवाले मतन कैसा लिखना है, इंग्लिश में तो दिया हूं, उर्दू में भी सुन लीजिए. हाँ, ऊपर दी हुई आयतें या आयात सूरतुल क़द्र से ली गई हैं और इस सूरे का नंबर कुरान शरीफ में 97 हैं. ये सूरत मक्का मुकर्रमे में नादिल हुई. इसमें 1 रुकू और 5 आयतें हैं. एक आम रेफरेंस है, हवाला है कोई भी आयत के लिए इस सूरे में. ओके. इस सूरत में या इस सूरे में अल्लाह सुब्हानहु व तआला शब क़द्र की फजीलत को बयान फरमाया है, जो 1000 महीनों से अफजल है, 1000 महीनों से बेहतर है. कम से कम इतना तो भी लिखे तो अब इंशाअल्लाह फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इंशाअल्लाह. अब इन आयत जो आयतें दी जाती है क्वेश्चन पेपर में, उनके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करना चाहते हैं, ज़्यादा तशरीह करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन हर आयत की तफसीर और तशरीह अच्छी तरह पढ़ने के बाद और समझने के बाद. ठीक है, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे. उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे. अल्लाह ताला आप सबको नेक तौफीक अता फरमाए और शानदार कामयाब भी अता फरमाए. आमीन या रब्बल आलमीन. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.